यस मानसी जी, आप लाइव हाँ मैम, वो है? मैं स्क्रीन फोन टेढ़ा करती हूँ तो पता नहीं क्या हो जाता है, बंद, मेरे को दिखना बंद हो जाता है स्क्रीन। बस बस ठीक है, ये ठीक है, ठीक है। टेढ़ा करिए मानसी जी प्लीज। There's some problem, 1 minute. It is live already. लाइव है आप मानसी जी? Yes ma'am. Hello, namaste and good evening to all viewers and participants. I welcome you all on behalf of WHRF, Women Health Research Foundation. Today is the 7th episode in the second series of the Yoga Research Study Circle that we have been conducting under this organization. Amongst us today, we have Ms. Palka Bhasin Kapoor. She's a clinical psychologist who has been practicing for over 15 years. Reach, assist, and care is the philosophy that has led her to the path of solving people's psychological problems with utmost dedication. She helps individuals adapt to all the events and situations in their life in a socially acceptable way. She has done her master's in clinical psychology, is a certified lifestyle management expert holding a postgraduate degree in preventive and promotive healthcare from Apollo Hospitals. She studied hypnotherapy from California University, USA, is a certified art therapist from AIB-HAS New Delhi. She's a certified didactic and has hands-on training in basic life support by the American Heart Association. Ms. Palka uses an eclectic approach in therapy that is a combination of CBT, REBT, DBT, behavior therapy, etc. She's able to deal with all kinds of mental health and emotional issues, but her forte lies in anxiety, depression, stress management, relationships, anger management, etc. In the field of education, she has done her PG diploma in management of learning disabilities. She has also been an active participating member of the CBSE National Adolescence Education Program under the Ministry of Human Resource Development, Government of India, and National Progressive Schools Conference in technical collaboration with Expressions India. Ms. Palka has her own practice, Dumpito, and she's also associated with Regd, Know Your Mind, which is a Mumbai-based mental health platform, and Health Builder, an online platform which supports mental health and nutrition and psychologists with clinical excellence. She has catered her counseling services and therapy to individuals not just in India, but across the globe. You name the country, and she has done it there, whether it's New York, USA, California, Canada, Muscat, and of course, all over India, South Africa, UK. So I hereby invite Ms. Palka Bhasin Kapoor to share her insights on mental health and infertility. Welcome, Ms. Kapoor. Over to you. Thank you so much for the warm welcome and a beautiful description. And hi friends, namaskar mitron. सबसे पहले मैं दिल से ग्रेटफुल हूँ WHRF योगा रिसर्च स्टडी सर्कल का. It is such a beautiful platform where they get professionals from all over and connect them with individuals so that we can give right information and we can help a lot of individuals in contributing and spreading and connecting professionals. Thank you so much, WHRF. So आज का टॉपिक है मेंटल हेल्थ एंड इनफर्टिलिटी, जिससे बहुत सारी फैमिलीज डील कर रही हैं. It's no longer a taboo. In fact, it's a very open book that infertility is on the rise. And let's find out why is it happening and what happens when we come to know that we are suffering from infertility, or our near and dear ones are suffering from infertility, और हमारी सिस्टर, हमारे डॉटर इन लॉ, हमारे घर में ये हो रहा है. जब हमें पता चलता है, so let's see what happens, how people react, how we react to infertility, what exactly happens to our mental state of mind, to our emotional state of mind, to our physical state of mind, and what happens to our overall health when we know that we have been suffering from infertility or diagnosed with infertility. So let's go and share this information.
Can you see the screen? Yes, ma'am. Okay, great. So I like to, take it forward by, you can see how stressed the couple is. Not only the couple इसमें stressed होते हैं, पूरी family इसमें stressed होती है, because ये कोई lady या gents या male या female का मामला नहीं है. It is the whole family that is affected by news of infertility. क्या आपने कभी सोचा है कि इनफर्टिलिटी राइज पे क्यों है? साइंस ने इसका सोल्यूशन तो निकाल लिया है, डॉक्टर्स ने सोल्यूशन निकाल लिया है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये बढ़ क्यों रहा है? व्हाई इज इट इंक्रीजिंग? मतलब एवरी सेकंड वुमेन और एवरी सेकंड फैमिली इज गोइंग थ्रू इट, लेकिन कभी सोचा ये हो क्यों रहा है? सबको सोल्यूशंस भी हैं, जगह जगह पे आपने देखा है आजकल IVF सेंटर्स खड़े हुए हैं, सरोगेसी हो रही है, adoption programs are on, so solutions are there, but why is it happening? हम अपने नेचुरल वे से एक कंसेप्शन और डिलीवरी क्यों नहीं हो रही है? वो ऐसा क्या हो गया है कि एक नेचुरल वे विच इज सो ऑर्गेनिक, वो क्यों नहीं हो रहा? व्हाट इज द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट लाइक मदर अर्थ. पहले हमने मदर अर्थ को पोल्यूशन किया, पेड़ काटे, पोल्यूट किया, प्लास्टिक फैलाया, नदियों को गंदा किया, फिर हम लोगों को एजुकेट करते हैं कि अब इसमें कैसे सफाई की जाए, वातावरण को कैसे साफ किया जाए, कचरे को कैसे अलग अलग बॉक्सेस में डिवाइड किया जाए, ई वेस्ट मत करें. लेकिन पहले हमने पोल्यूट किया. उसी तरह पहले हमने अपनी बॉडी को अब्यूज किया, अपनी बॉडी के जो एक नेचुरल मैकेनिज्म है उसके साथ खेला, और फिर हम अलग अलग स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं उसको ठीक करने के लिए. Infertility is almost like an epidemic. Epidemic क्यों? Because every second family, every second woman, every second man is suffering from it. Whether you admit it or not, it is a problem. It's a lifestyle disease. And what can be the reason? जिस तरह से आप देख रहे हैं, what can be the reason? Mentally, we are very stressed. Mental health and infertility go hand in hand. Mental health and infertility goes hand in hand, and mentally we all are so stressed about life. The way we think about life, the way we think about situations, हम लोग इतना ज्यादा stressed हैं कि हम यहाँ से बिल्कुल परेशान हो चुके हैं ऊपर से. There is no peace of mind. And this, like मैं पहले भी अभी मैंने बोला है, this is not the problem of the woman only or the man only. It is the problem of the family now, because every family is going through it. Let's look at few of the reasons how we have abused ourselves and how we have, played with our body. Career, goals, night shifts. There is no time for couples. These things you already know. इसमें से काफी चीजें आप लोगों को already मालूम है, मुझे ज्यादा इनमें जाने की जरूरत नहीं है. फिर भी अगर किसी को ज्यादा information चाहिए, they can always get in touch with me. But most of these things that are written on the screen that I'm presenting, that me time. रात को सबको me time चाहिए. You want to relax. There is no interaction. The cell phones. We are keeping the cell phones in our pockets. We want to enjoy the ding status, double income, no kids, and of course, work from home. There is so much of stress, hormonal stress, and a big nutritional gap is one of the main reason of infertility. Nutritional gap is one of the main. क्या हम जिस तरह का खाना खा रहे हैं, जिस टाइम पे खाना खा रहे हैं, जो विटामिन्स और मिनरल्स हमारी बॉडी को जरूरत है, क्या हम अपनी बॉडी को दे रहे हैं? क्या हम अपनी बॉडी को वो टाइम दे रहे हैं? Absolutely not. And nutritional gap is one of the main reasons for infertility, which is on the rise. And what is this nutritional gap? What is this nutritional deficiency? ये nutritional deficiency होती क्या है? आए इसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान करें.
Basic cause of nutritional deficiency is caused by inadequate absorption and increased requirement of which is not met. And what should be done? What should be done? For example, अगर हमें दिखता नहीं है साफ से तो हम एक चश्मा लगा लेते हैं. तो चश्मा क्या करता है? वो सप्लीमेंट करता है. It helps us, it enables us that we can see properly. हम ठीक से देखें. उसी तरह अगर हमारी बॉडी को कोई नीड बेस्ड खाना चाहिए, और वो कैसा खाना कैसा खाना होना चाहिए, वो खाना ऐसा होना चाहिए, वो सप्लीमेंट्स ऐसे होने चाहिए जो ऑर्गेनिक हो, जो नॉन टॉक्सिक हो, जो नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड हो, जो ऑथेंटिक हो, जो रिजल्ट ओरिएंटेड हो, जो प्लांट बेस्ड हो, और जो इनकी बायो अवेलेबिलिटी अच्छी हो. क्या हम ऐसा खाना खा रहे हैं फ्रेंड्स? क्या हम अपने आप को, अपनी बॉडी को ऐसा न्यूट्रिशन दे पा रहे हैं आज के टाइम में, जहां इतना स्ट्रेस है, जहां इतना कंपटीशन है, जहां हमारे इतने पर्सनल गोल्स हैं, जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा, हमारा वर्क है, हमारे करियर गोल्स है, हमारा एक लाइफस्टाइल है जो हम लिव करना चाहते हैं, जिस तरह से अपनी लाइफ जीना चाहते हैं. सो डू आर वी गिविंग आवरसेल्व्स दैट मच ऑफ टाइम? क्या हम इसके बारे में सोच रहे हैं? इससे क्या होता है अगर एक साइकिल में हम एक स्पिन में चले जाते हैं, जहां पे हमें डेफिशिएंसी हो, जहां पे हमें हार्मोनल इम्बैलेंस हो? होता क्या है? व्हाट आर द कॉमन सिम्टम्स ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस? लेट्स see them. Some of them you already know are depression, excessive facial hair, disturbed sleep, cramps, mood swings, irritation, weight gain, lower belly fat, hair fall, dandruff, weak bones, obesity, insulin resistance, thyroid issue. थायराइड एक बहुत बड़ा इशू होता है प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी में. एंड other deficiencies are also there with this blood pressure and diabetes in pregnancy, before pregnancy, post pregnancy. इतने सारे hormonal imbalances हमारी बॉडी में हो जाते हैं, and it leads to so much stress. It's not only about conception. We also have to carry on the pregnancy for 9 months. पहले तो कंसेप्शन ही नहीं हो रहा, जहां पे हम इतने डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं, और एक डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डॉक्टर्स. कि हम बोले कि हम एक जगह जा रहे हैं, नहीं, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डॉक्टर्स. आप अपने डॉक्टर के पास तो जा ही रहे हैं ट्रीटमेंट के साथ, उसके साथ आप एक वेलनेस कंसल्टेंट के पास भी जाना पड़ता है जो आपकी डाइट के लिए आपको रिकमेंड करे. Then of course yoga plays a very important role. Exercise, yoga, जिससे आपको mental peace, calmness मिलती है. And the therapist helps you to deal with your negative thinking, with your thought process. So it's a combination of therapists, a combination of doctors who work together to help you to overcome infertility. It is just not one कि हाँ हम योगा कर रहे हैं तो इट विल हेल्प अस. नहीं, अगर आप योगा कर रहे हैं तो आपको अपना खाना भी ठीक करना पड़ेगा. आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, आपको योगा भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग, बिकॉज अंदर से जो हमारा इम्बैलेंस हो चुका है उसको अब हमें ठीक करना है. वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू करेक्ट इट. Now let's look at this. Our pituitary glands are responsible for stimulating ovulation every month, and the pituitary gland में यहाँ पे योग plays a very important role. It relaxes the mind, especially the yoga asanas. They help to oxygenate the uterus and the ovaries. So, and it also strengthens the abdominal area. So when we talk about pituitary gland and it's responsible for ovulation, यहाँ पे yoga plays a very important role because it helps to stimulate the pituitary gland. When जब आपका pituitary gland stimulate होता है तो आपके जो ओव्यूलेशन होती है हर महीने वो हेल्दी होने लगती है, कंसिस्टेंट होने लगती है.
उसमें कंसिस्टेंसी आती है and it gets better. So yoga is very very important and it plays a very very good role to stimulate, to enhance your pituitary gland. It also helps you to relax your mind. The other reasons are blocked fallopian tube. You see, जैसे मैंने आपको कहा, mentally इतना थक गए होते हैं, अगर आप देखेंगे तो आप देखिए the sperm is trying to go to the egg. So either the egg is unhealthy or the sperm is so stressed. जैसे हम मानसिक तौर पे हम लोग stressed हैं, ऐसे हमारे body parts भी stressed हो जाते हैं. You know, the DNA, the sperms, they're tired. उनमें इतनी शक्ति नहीं होती कि वो they can reach the eggs because they are also under stress. When our body is under stress, when mentally we are under stress because of work, relationship issues, फाइनेंस इश्यूज, या अपने थॉट प्रोसेस से, या घर के माहौल से, या वर्क सिचुएशन से, तो आप सोचिए हमारे अंदर जो एक फिजियोलॉजिकल बॉडी है, जो हमारे अंदर हमारे ऑर्गन्स हैं, डू यू थिंक कि वो बहुत हेल्दी होंगे? वो जिस तरह से जो उनका काम है, जो जिस तरह से जो उनके फंक्शन है, आपको लगता है वो अपनी फंक्शन अच्छे से कर पाएंगे? नो, they will not be able to perform. And nutrition plays a very very important role over here. What we eat, how we eat, how much we eat, किस समय अपना खाना ले रहे हैं, और अगर खाने से हमें वो नहीं मिल रहा जो हमारी बॉडी को मिल रहा है, are we supplementing our body? Are we taking nutritional supplements? There are many nutritional supplements available in the market, but जैसे मैंने आपको पहले psycho educate किया, which are the ones which are really result oriented, plant based, which are easy to digest, और ये हमें गाइड कर सकती हैं, या इसके लिए गाइडेंस लेने के लिए एक वेलनेस कंसल्टेंट जो न्यूट्रिशन के बारे में जानते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उनसे गाइडेंस ले. फेलोपियन ट्यूब्स डैमेज भी हो सकती हैं. इन्फेक्शन, chronic medical illnesses could be many reasons why the fallopian tubes are, blocked. And nutrition and therapy plays a very very important role. So infertility is not only about women, it's about men also. Male health issue also. Are men taking too much of stress? Are men drinking too much? Are they smoking too much? Is the sleep regulated? Mental stress and diet. These things are very very important and need to be taken in consideration. अगर आप ये slide देखें, इसमें मैंने slight humor भी add किया है. Why does it take 50 million sperms to fertilize one egg? Because they won't ask for directions either. So men, it's not only about women, men also need to look into their physical health and their mental health. जैसा मैंने अभी कहा, क्या जो men folk हैं, क्या वो smoke कर रहे हैं, या वो drink करते हैं, या कोई ऐसा substance use कर रहे हैं जैसे tobacco, excess of it, और other kind of substances, क्या mentally उनको क्या stress हो रहा है, क्या उनकी sleep regulated है, क्या वो अपनी diet, क्या उनकी high protein diet है, are they looking after their diet? It is not only for the women, it is for the men also, because infertility may there are two things, egg and the sperm, and they come for both the man and the women. So it's important that both the man and the woman, they have good physical health, they both have good mental health, and they both share the same kind of happiness and vibrations. Only then they will be able to deal with this issue. This is very very common. Why eggs are not released every month? I think every आजकल very very young women also are suffering from is PCOS and PCOD. And the main reason for PCOD and PCOS, why is it on the rise? बहुत जल्दी शुरू हो जाता है 20s में या 18s teens में ही, कईयों को 20s में ही बहुत जल्दी हो जाता है. न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी. Nutritional deficiency is one of the number one cause
of PCOD and PCOS, the kind of food that we are having. You know, junk eating, binge eating, stress eating. These are one of the main reasons that what kind of food intake are we taking. Very, very important. And over here, again, mental counseling is very, very important. When we are suffering from PCOD and PCOS, we are very, very stressed. And when we are stressed, we must sort out to therapy. What are our triggers? हमारे ट्रिगर्स क्या हैं जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस होता है? वो ऐसी कौन सी चीज है जो हमें परेशान करती है? इज इट आवर जॉब? इज इट आवर करियर? इज इट आवर रिलेशनशिप? या जिस तरह से हम सोचते हैं कि हमारा सोचने का ढंग, इज इट पॉजिटिव? इज इट न्यूट्रल? और या लॉट ऑफ नेगेटिव थिंकिंग? हम जितनी इरेशनल थिंकिंग करते हैं, दैट इज नेगेटिव थिंकिंग, वो उतनी ही नॉन फ्लेक्सिबल होती है, जिसे इनफ्लेक्सिबल कहते हैं. जो हमारी थिंकिंग इनफ्लेक्सिबल हो जाती है, तो जिस तरह से हम सोचते हैं, जिस तरह से हम बिहेव करते हैं, जिस तरह से हम फील करते हैं, वो सारी फीलिंग्स बहुत नेगेटिव होती हैं. लेकिन जब हम रैशनली सोचते हैं, हमारी फीलिंग्स उतनी ही फ्लेक्सिबल होती हैं. वी स्टार्ट लुकिंग एट डिफरेंट ऑप्शंस. एंड यू नो व्हाट, योगा रियली हेल्प्स दिस. जिस तरह जब हम योगा करते हैं, हमारी बॉडी स्ट्रेच होती है, हमारे मसल स्ट्रेच होते हैं, उसी प्रकार से योगा करने से हमारा थिंकिंग प्रोसेस भी फ्लेक्सिबल हो जाते हैं. We are okay for negotiating. We are okay to look at different options. So yoga really helps in it. And of course, smoking affects DNA and is a big enemy of infertility. आज के टाइम पे स्मोकिंग मतलब ऐसा नहीं है कि only men are smoking, women are also smoking. And it's not only smoking by cigarette or tobacco, it's passive smoking also, the pollution in the air. So it does affect our DNA. So it's very important. There are certain things we can control, but there are certain things we can't control. जो एक air में pollution है, हम उसको नहीं control कर सकते. लेकिन हम योगा करके, when we breathe in and exhale out, we can definitely make our inner system much more positive, much more effective, and we can heal ourselves. So it's very, very important that we look at our breathing. Breathe in and breathe out. It's very, very, very important. Usually मैं अपने clients जब मेरे पास आते हैं जिनको इनफर्टिलिटी इश्यूज होते हैं, वो डॉक्टर से तो ट्रीटमेंट ले ही रहे होते हैं, लेकिन जो उनको स्ट्रेस होता है, बिकॉज जो ट्रीटमेंट होता है आईएफपी का या सरोगेसी का, इट्स वेरी स्ट्रेसफुल, इट्स नॉट इजी. आपको बहुत राउंड्स लेने पड़ते हैं ऑफ ट्रीटमेंट. द काइंड ऑफ इंजेक्शंस दैट यू टेक, द काइंड ऑफ मेडिकेशन दैट यू टेक, इट रियली डिस्टर्ब्स योर इनर बैलेंस. You know, those medicines are not very easy. जब आप लेते हैं, आपकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं, बहुत सारे बिहेवियरल चेंजेस आते हैं. कभी कभी चिड़चिड़ापन भी आ जाता है, कभी कभी इरिटेशन होती है, कभी कभी एंग्री हो जाते हैं, आप स्नैप करने लगते हैं, लेथार्जी सी हो जाती है. बिकॉज क्या है ना, आपका अंदर का सिस्टम हिल गया है, इट्स नॉट इन इट्स बेस्ट शेप, एंड नाउ हम रेक्टिफाई करना चाहते हैं. जैसे मैंने कहा, पहले हम मदर अर्थ को पोल्यूट करते हैं और उसके बाद हम उसको क्लीन करते हैं. तो पहले हमने अपने आप को अब्यूज किया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फॉर वट एवर सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस, और अब हम उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं कि हम कैसे ठीक करें. सो आई ऑलवेज टेल माई क्लाइंट्स दैट इट्स वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे एक गार्डनर होता है जब, या एक फार्मर होता है जब उसको एक पौधा लगाना होता है या कोई सीड लगाना होता है, वो उसकी तैयारी करता है. इट डजंट हैपन ऑटोमेटिकली कि आज आपने पौधा लगाया और वो कल उग गया और उसने आपको फल दे दिए. तो क्या करते हैं, पहले हम सीड लाते हैं, सीजनल सीड जो सीजन का होता है. फिर हम उसमें मिट्टी डालते हैं, फ्रेश इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, और वो भी ऑर्गेनिक. फिर हम उसको टिलिंग करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, फिर रोज उसको पानी देते हैं, कभी धूप में रखते हैं, कभी छांव में रखते हैं, उसको नर्चर करते हैं.
with love and affection, because हमें पता है उसमें से एक प्लांट निकलेगा या कोई फ्रूट निकलेगा. क्या हम अपने शरीर के साथ ऐसा करते हैं? Do we love ourselves? Do we nurture ourselves? No, we don't have time only, and we are so stressed out. हम अपने सेल्स को कैसे बात करते हैं? Every cell of our body, every organ of our body, are we grateful to it? Are we thankful for it? No, we are not. We take them for granted. और जब हमारे organs या हमारी body में कोई deficiency आ जाती है या कोई disease आती है, तो हमारी thought कैसी हो जाती है? Why me? हम अपने आप को blame करते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, या is God punishing me? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? सो हम अपनी जो सेल्फ टॉक है नेगेटिव हो जाती है. तो हम अपने आप से कैसे बिहेव कर रहे हैं? क्या हम वैसे बिहेव कर रहे हैं जैसे हमने पौधा लगाया था, जिस तरह से माली पौधा लगाता है फिर उसकी देखभाल करता है? नो, वी डोंट टेक केयर ऑफ आवरसेल्फ दिस वे. सो एक इनफर्टिलिटी का एक मैंने बनाया है उसका. सो इट सेज आई इज फॉर इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन, eating junk food, not eating on time, binge eating, having mood swings, negative attitude. Most of our talks are negative self-talks. We always are looking forward, or we always think of the worst things that can happen to us. We are never on a positive lookout. Lack of fun. Because of our stressful life, where is the time to have fun or enjoy or smile or laugh? Lack of exercise. Most people, 90% of people have no time to exercise. They cannot even take 40 मिनट एक वॉक के लिए भी नहीं निकाल पाते हैं अपने बिजी स्केड्यूल से. या तो टाइम नहीं होता, और देयर इज लेथार्जी. आपकी बॉडी आपका साथ नहीं देती. थायराइड could be a problem. Thyroid plays a very very important role. Obsession with incomes leads to stress. Lack of green leafy vegetables. Are we eating enough green leafy vegetables? No, we are very choosy in our diets. We want to eat good tasty foods. हम सीजन के हिसाब से तो खाते ही नहीं है, अपनी मर्जी के हिसाब से खाते हैं, टेस्ट के हिसाब से खाते हैं. I too much focus on I, me, mine, my time, myself, me time, जिसको हम आजकल कहते हैं me time. और उस me time में क्या करते हैं? मोस्टली हम सोशल मीडिया पे जाते हैं, यूट्यूब देखते हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे होते हैं, या अमेजॉन प्राइम देख रहे होते हैं. तो ये क्या करता है? ये जो हम एक्टिविटी करते हैं सोशल मीडिया पे, जैसे आप यूट्यूब पे जाते हैं तो उसमें एक प्लेलिस्ट आती है. अगर आप लव सॉन्ग सुनते हैं तो एक लव सॉन्ग्स की प्लेलिस्ट आ जाती है. अगर आप हिंदी में लव सॉन्ग सुन रहे हैं तो हिंदी की एक प्लेलिस्ट आएगी. फिर इंग्लिश की भी एक प्लेलिस्ट आती है, फिर जापानीज, कोरियन, रशियन, हर लैंग्वेज की एक प्लेलिस्ट भेजते हैं. ऐसा ही आपका माइंड है. अगर आप नेगेटिव थिंकिंग की प्लेलिस्ट ऑन कर देंगे तो आपका माइंड सिर्फ नेगेटिव थिंकिंग की प्लेलिस्ट ऑन हो जाएगा. हर सिचुएशन में आपको नेगेटिव ही होगा. सो इट्स अप टू यू व्हाट काइंड ऑफ अ प्लेलिस्ट you want to switch on in your mind. A positive playlist or a negative playlist, a positive behavior or a negative behavior. आपकी playlist आपके हाथ में है. Untrained thoughts, you need to watch your thoughts. You need to focus on thoughts, and a therapist plays a very important role. A psychologist, a therapist, she can help you in thought corrections through therapy. There are different kinds of therapy like CBT, REBT, DBT, hypnotherapy. So when we go to a therapist, she guides us in the correct manner. And lost youthfulness, of course, it plays on our youth. But the good news is that control and choices are in your hand. How are the control and choices your hand? Nutrition plays a very important role, and if you take the right choices, if you take the right control of your life, the choices are yours. The right choices. नहीं तो क्या होता है? We lose control. Time भी निकल जाता है, control तो निकल जाता है, और choices भी हमारे पास बहुत limited रह जाती हैं life में. So the control and choice is in your hand. Either you invest in therapy in yourself right now and make the right choices, or then you bear the consequences of lack of choices. Whatever is left,
You have to go with it. Have an open mind and take therapy and do yoga. Why I say have an open mind? एक open mind रखना बहुत जरूरी है. Problems are a part of life, but are you okay to take therapy, to ask for help or to go to doctor? हम ये करते नहीं है, अपने में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं. या तो हमारे पास टाइम नहीं है, और या हमें लगता है इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी. क्या होगा थेरेपिस्ट से बात करने से? और सबसे बड़ा रीजन, लोग क्या कहेंगे. लोग क्या कहेंगे? आई एम मीटिंग अ साइकोलॉजिस्ट, आई एम गोइंग टू अ थेरेपिस्ट. द चॉइस इज योर्स. ईदर यू इन्वेस्ट इन योर मेंटल हेल्थ, physical health, emotional health right now, or there are no choices left. You suffer in silence, you suffer, you're not able to express yourself, and there are many more things and consequences. मैं यहाँ पे एक बहुत important मैसेज शेयर करना चाहूंगी कि it's okay to have a career, it's okay to marry late, it's okay to have a child late. You have to make choices, what you want and what you don't want. Decision making is very important. क्या होता है ना, हमें ये प्रॉब्लम्स क्यों होती है इनफर्टिलिटी की या लेट प्रेगनेंसी में इतनी सारी दिक्कत क्यों आती है? क्योंकि हम डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते. जब हम डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते तो हम एक पेंडुलम की तरह लटकते रहते हैं. अभी करें, बाद में करें, पहले करियर अचीव कर ले या पहले लेट शादी करें, पहले घूम लें फिर लें, इंजॉय कर लें, आप सब करें, बट मेक अ डिसीजन. डिसीजन मेकिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कब क्या करना है, क्योंकि हर चीज का एक टाइम होता है. there's a time for everything. If you make your decisions, you will know what you have to do and when you have to do. When you make decisions, your mental stress reduces. अगर आपको पता है आपको बेबी कब करना है, आपको मालूम है, पेरेंट्स कह रहे हैं, फैमिली कह रही है, सोसाइटी कह रही है, मेरे ड्रीम्स कुछ हैं, इट्स ओके, यू कैन अचीव एवरीथिंग, बट यू मेक योर डिसीजंस. एंड थेरेपी में डिसीजन मेकिंग की एक शीट होती है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस शीट. जो मैं डिसीजन आज ले रही हूँ उसके शॉर्ट टर्म कॉस्ट क्या है, उसके लॉन्ग टर्म कॉस्ट क्या है, उसके शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स क्या हैं और उसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स क्या हैं. जब आप वो शीट बनाते हैं मेंटली या पेपर पे, आपको पता है व्हाट आर यू डूइंग एग्जैक्टली, एंड अ थेरेपिस्ट कैन हेल्प यू इन दिस. व्हेन यू आर सॉर्टेड मेंटली कि मुझे कब क्या करना है, आपको स्ट्रेस नहीं होता. और जब आपको स्ट्रेस नहीं होता, यू आर एबल टू डील विद सिचुएशंस इन अ मच मोर बेटर and an effective manner. And this sheet also helps you in reducing your mental stress. Okay, and it guides you forward. And also I'd like to share with you that how therapy helps in decision making. If you read these examples of people who've invested in their mental health, it says, I just wanted, hi Palka, good morning, happy new year. I just wanted to share some good news with you. I've gotten a great salary hike at my current job, and you taught me a lot about gratitude and giving myself a pat on the back for a job well done from time to time. I just felt like sharing this little achievement with you, as it wouldn't be possible without the help I got from you in doing better generally in life. So thank you. What happens is, this is an example. When you take therapy, when you go to a doctor, when you go to a yoga specialist, or when you go to a holistic wellness consultant who will guide you in a proper manner, you come to know कि जिस बोट में मैं आज हूँ, is this a better boat, या जिस बोट में मैं जाना चाहती हूँ, that is a better boat. जिस स्टेट में हम अभी हैं, is that a better state, या जिस स्टेट में हम जाना चाहते हैं, that will be more helpful. Because today's topic is infertility. ये अकेले काम नहीं करेगा किसी एक के पास जाने से, आपको सबकी मदद लेनी पड़ेगी. आपको एक डॉक्टर की भी मदद लेनी पड़ेगी,
आपको एक योगा एक्सपर्ट की भी मदद लेनी पड़ेगी, who will help you in balancing your breath. She'll help you with the asanas. She'll help you to calm your mind. You will also have to take a help of a nutritionist who can help you with the right food, with the organic supplements. What is your body type? You will also need the help of a therapist who can guide you with your thought process, who can help you in decision making, because the system is now disrupted, the internal system. अब उसको करेक्ट करना है, तो उसको करेक्ट करने के लिए you will need help of lot of people because it is stressful. Infertility is a problem, it is on rise, and there are solutions, but very very important, first look within yourselves. हम ऐसा अपनी बॉडी को अब्यूज क्यों करें? Why is it that we should abuse our body and not take care of it? It's better to take care of it at the right time, meet the specialist at the right time, nurture your body like the gardener who sows the seed, and take proper care so that these issues don't occur. I hope this information was beneficial and informative to all of you. Now we can open the house to sharing questions and answers in case of any. Hello. 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 I think Hello. so. There is Pavitra, you can ask the question to ma'am. Unmute नहीं हो रहा है. Okay. Good evening, ma'am. Good It evening. was an informative sessions. You have told us enough informations, and that is very useful also. My one question is there: what are the ways to fight infertility without getting stress? See, the simplest ways, like I told you, to fight infertility without stresses, focus on your nutrition. Yeah. Nutrition, very, very important. Exercise, yoga, deep breathing, different forms of relaxation. They will help you coping with stress. अपना lifestyle, अपना work-life balance बना के रखें, तो it will help you without stress. It will help you to deal with infertility. Okay. Thank you, ma'am. That was a very informative. Thank you so much. Hello. Hi, Palak. Hi. Thank you. Yeah, thank you for this session in fertility. And my question is this: you told me about the supplements. Yeah. So, which kind of the supplements are the supplements we can use or not? See, Or ma'am. supplements are good. Yeah. Yeah. Tell me, ma'am. Please continue. There is a doubtful about the supplements now always. So, ma'am, since I am not from the field of supplement, I'd like you to tell the information that I have. It's very important कि supplementation के लिए आप किसी wellness consultant के लिए मिले, एक holistic wellness consultant जो आपको supplementation के ऊपर guide कर सके. और बहुत जरूरी है, जो जानने की बात है, जो आपको guide कर रही हैं, वो guide करें कि supplements organic हैं या नहीं. सप्लीमेंट्स नॉन टॉक्सिक होने चाहिए, नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड होने चाहिए, ऑथेंटिक होने चाहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड होने चाहिए, जिनकी बायो अवेलेबिलिटी दैट इज अब्जॉर्प्शन शुड बी गुड, और जो प्लांट बेस्ड होने चाहिए. अगर हम ऐसे सप्लीमेंटेशन अपनी डाइट में, अपनी बॉडी में यूज करें प्रेगनेंसी के लिए, इनफर्टिलिटी के लिए, तो बहुत हेल्पफुल रहते हैं. पर्सनली मैंने जो अपनी 2 प्रेगनेंसीज, आई हैव 2 चिल्ड्रन, अपनी दोनों प्रेगनेंसीज में जो यूज किए हैं, बिकॉज मुझे बहुत कॉम्प्लिकेशंस थी. मेरे पहले प्रेगनेंसी में मुझे बहुत हाई ब्लड प्रेशर था, एंड दूसरी प्रेगनेंसी में आई हैड थायराइड ऑल्सो. सो शुरू से ही व्हाट आई मेट अ कंसल्टेंट एंड शी गाइडेड मी, शी पुट मी, एंड इवन माय गायनोकोलॉजिस्ट, दे गाइडेड मी टुवर्ड्स न्यूट्रलाइट. सो पर्सनली मैंने न्यूट्रलाइट लिया था अपनी दोनों प्रेगनेंसीज में. बोथ माय प्रेगनेंसीज वर हाई रिस्क प्रेगनेंसीज.
Nutralite helped me with proper diet, counseling, a good gynecologist. जैसे मैंने कहा, this is a combination. योगा भी मैं करती थी, मुझे आती थी सिखाने के लिए योगा, मेरी टीचर, to deal with my blood pressure, breathing exercises सिखाती थी. So it's a combination of all this. And a person who's from this field will be able to give you a much better detailed what kind of supplementation you should take according to your body type, the kind of pregnancy आपकी है, is it a natural conception, is it IVF, तो वो आपको ज्यादा बेहतर गाइड कर पाएंगी. Okay. My second question about the protein intake. How can I increase the protein intake? See, Natural or plant-based? प्लांट्स पहले तो नेचुरल फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स लेते हैं. एग वाइट में बहुत प्रोटीन होता है, और हमारी जो दालें हैं, पल्सेस हैं, उनमें बहुत प्रोटीन होता है. पनीर इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन. जो नेचुरल सोया इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन. जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए नॉनवेज इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन. और नेचुरल प्रोटीन बेस्ड बहुत सारे आजकल प्रोटीन पाउडर्स आते हैं. अगेन, आई विल नॉट कमेंट ऑन एनी वन ब्रांड बिकॉज आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी ब्रांड. जो आपकी वेलनेस कंसल्टेंट हैं, या जो आपकी न्यूट्रिशनिस्ट हैं, या जो आपको गाइड करेंगी आपकी बॉडी टाइप के हिसाब से, कौन सी जिसमें बायो अवेलेबिलिटी अच्छा है, जिसमें शुगर लेस होती है, जो प्लांट बेस्ड हैं, they will be able to guide you which is good for your health, your body type, your body shape. You know, they will be able to guide you. So you can refer to them. If you need any help, you can always get back to me on this, but I will not be able to promote a brand or give you any example of that. Okay, thank you so much. Thank Okay. you. Any other question? हेलो पलका जी, नमस्ते. Hello. नमस्ते. मुझे कुछ पूछना था. सेशन तो बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छे से समझाया. Thank you so much. Thank you. तो मुझे एक ये क्वेश्चन करना है कि क्या अगर हम जल्दी उम्र से अगर योगाभ्यास करते हैं रेगुलरली, तो क्या हमें इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आती है क्या? See, it may or may not. क्योंकि अगर ये मेडिकल प्रॉब्लम है, जैसे हमने जो इश्यूज डिस्कस किए कई, इसमें जो मैंने आपको बताया, अगर मेडिकल प्रॉब्लम है तो मेडिकल प्रॉब्लम है. लेकिन साइंस में देखा गया है और रिसर्च की गई है कि जो लोग योगा प्रैक्टिस करते हैं, योगा का अभ्यास करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और आसन, व्हाट हैपेंस है, जब आप योग प्रैक्टिस करते हो, यू आर एट अ हायर फ्रीक्वेंसी. आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत हाई होती है, बढ़ जाती है. आप जिस लेवल पे होते हो, जो आपके सेल्स होते हैं, वो एक हायर फ्रीक्वेंसी में होती है. तो आपको अगर ये इशू है भी, वो आपको इस तरह से गाइड करती है, इस तरह से आपको हेल्प करती है, दैट यू अट्रैक्ट द राइट पीपल. They will send you to the right solution to the problem, because you are at a higher frequency. Your breathing, your vibrations are much higher than the normal people जो योगा नहीं प्रैक्टिस करते. तो जब आप योगा प्रैक्टिस करते हैं, you are at a higher frequency, a higher vibration, your cells are at a much different level. तो अगर आपको प्रॉब्लम होती भी है, तो जिस तरह से आप उससे डील करते हैं, या जिन लोगों से आप मिलते हैं, जब आप अपने डॉक्टर से, स्पेशलिस्ट से, यू आर एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस. Your thinking does not become negative. You are hopeful, you are willful, you are looking forward. आप rationally सोचते हैं. You are more flexible in your thought processes. So definitely yoga helps. Yoga is beautiful. From an early age, मैं तो कहती हूँ बच्चों को जब 2, 3, 4 साल की होते, they should start yoga at early as far as possible. कि अगर कोई problems हैं भी, तो योगा टेक्स केयर ऑफ इट टू अ ग्रेट एक्सटेंट. और ये मैंने खुद पर्सनली अपनी दोनों प्रेगनेंसीज में महसूस किया है, हाउ योगा हैज हेल्प मी पोस्ट and pre-pregnancy, when I was pregnant, and even post-pregnancy, after delivery, how yoga has helped immensely. So yoga is very important. Thank you so much, Palka ji. You're most welcome. Anybody else?
I think there are no more questions, Palka ji. Okay. On behalf of Women Health Research Foundation, I feel glad to express my vote of thanks for our today's guest, Palka Bhasin ji, for giving her precious time and for throwing light on importance of yoga and for being here with us today. Thank you, Palka ji. Your thoughts inspired us a lot, and I think अब लोग काफी हद तक मेंटल हेल्थ को इक्वली इंपॉर्टेंस देंगे. फिजिकल अभी जो लोग हैं मैक्सिमम लोग फिजिकल हेल्थ को इंपॉर्टेंस देते हैं, बट आई थिंक आपकी ये लेक्चर सुनने के बाद लोग काफी हद तक इंस्पायर्ड होंगे. थैंक यू. Thank you so much for this platform. Thank you for inviting me. Thank you so much.